वेलकम टू i-tutor पे सभी को आज स्वागत है. Today we will discuss about the financial administration. It's one of the important topic in our second paper, educational administration and management paper का एक important topic है and important syllabus का topic है financial administration. Okay, hope you all are following my lecture and study well. Only 1 week is left for the exam. Okay, don't be panic, be cool and study and prepare well. So today we will discuss about financial administration. Let's start the slides. Okay, what is, first of all we need to know about meaning of financial administration. Financial administration क्या है? In simple word, financial refers to such a system or method by which one can analyze the financial working of the public authority. Whatever the authority in university में example, it's our university exam, right? Registrar exam in university. So in university there is one system होगा, एक financial working के लिए एक separate system होगा. Okay, so it refers only they handle all the methods for financial expenditure and credit systems only. So that is financial administration. Thus the focus on the procedure which ensure the lawful use of public funds. कैसे ये public fund को अच्छे तरीके से ट्रूथफुल तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं for the benefit and development of that public organization or authority. However, the concept has been differently defined as under. So, बहुत सारा professors or financial experts define the financial administration in different way. Now, we will see 2 examples here. One is Professor M.S. Kenterick. He says that the financial administration refers to the financial measurement of government, including the preparation of budget method of administering the various revenue resources, the custody of public fund, procedure in expending money, keeping the financial records and the like. These functions are important to the effective conduct of operation of public finance. So Kenterick क्या बोला है? In financial administration, it refers financial measures of the government. Whatever if Indian government होगा, in American system होगा, whatever the government or whatever the authority, whatever the organization, they have their own financial measurements. Okay, उसमें क्या क्या आएगा? Budget आएगा. ओके ये बजट का मेथड थ्रू पता चलता है ईयरली कितना स्पेंड हो गया, कितना हमें मिल गया, फाइनेंस कितना है, उसमें प्रॉफिट क्या है, डेवलपमेंट्स के लिए कितना खर्चा किया, डेवलपमेंट्स है क्या नहीं या लॉस है, ये सब इस किस में पता चलेगा? बजट में पता चलेगा, राइट. एंड पब्लिक फंड, कस्टडी ऑफ पब्लिक फंड, रिसोर्सेज कैसे है, वहाँ कहाँ से हमें रेवेन्यू आ रही है, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग. सोर्स कहाँ से आ रही है फाइनेंस, सोर्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन. सो M.S. Kenterick very simply he defined the financial administration. And next one is Professor Dimmock. क्या बोला है Professor Dimmock ने? Financial administration consists of a series of steps. इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स है वेयर बाय फंड्स एंड मेड अवेलेबल सर्टेन ऑफिशियल अंडर प्रोसीजर विच विल एंश्योर देयर लॉफुल एंड एफिशिएंट यूज़. उसमें क्या क्या है? लॉफुल, ऑफ कोर्स वन लॉ होना ही चाहिए, राइट. अदरवाइज क्या आएगा वहाँ पे? करप्शन कैसे आते हैं? वो वहाँ पे वो एक लॉफुल नहीं है तो वहाँ पे करप्शन आता है. सो वहाँ पे इंश्योर होना चाहिए लॉफुल है वो एंड एफिशिएंट भी है. देन ओनली वी विल गेट वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी दे विल गेट द बेनिफिट और प्रॉफिट फ्रॉम इट. द मेन इंग्रेडिएंट्स आर बजटिंग. उसमें क्या है? मेन इज़ बजटिंग. ऑफ कोर्स ईयरली इवन आवर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ आर जस्ट प्रिपेयरिंग देयर बजट ईयरली बिकॉज पता चलना है कितना है हमारा एक्सपेंडिचर, कितना हमें आया है एंड कौन सा सोर्सेस में आया है, कैसे अभी अगला ईयर प्लान करना है. ये होते हैं बजटिंग. एंड अकाउंटिंग, auditing and purchase and supply, these all are the main ingredients of the financial administration. Okay,
एंड मेथड्स क्या है, मेथड्स और प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. एक मेथड होगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट. पहले हम डिस्कस किया उसका इंग्रेडिएंट्स. द फर्स्ट वन इज बजट. बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट. In university also there is one budget, and in central government, in state government, in local level, yesterday we discussed the decentralization. In local government panchayat there is also a budget system. Whatever authority, there is one of the important factor a budgeting. The term budget has been derived from the French word bogete. Okay, you can pronounce anyway, only you just see the spellings, how it spell it. Okay, that's important. You can do your own pronunciation. The term कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से आया है. ये एक फ्रेंच वर्ड है. बोगटे इज द फ्रेंच वर्ड, वहाँ से आया है बजट का वर्ड, विच मीन्स ए लेदर बैग और ए वॉलेट. सो एक लेदर बैग को फ्रेंच में बोलते हैं बोगट. ये क्या हो गया, बजट का वर्ड आ गया हमारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में. द चांसलर ऑफ एक्सचेकर इन इंग्लैंड यूज्ड टू कैरी हिज paper in the back to house of commons. Okay, this is the history of this budget का word कहाँ से origin हो गया है. You just remember for your knowledge. Okay, Professor will by defined budget, it should be at once a document through which the chief executive comes before the fundraising and fund granting authority and makes full report regarding the manner and which he or his subordinates have administered affair during the last complete year. So ये मेथड क्या है, इवन इन आवर इंडिया. ओके, डोंट फॉरगेट दिस हिस्ट्री अबाउट द बजट. जस्ट इन आवर इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, यू कैन सो न्यूज़, फाइनेंस मिनिस्टर ईयर एंड में हमारा इज द मार्च इज 31st इज द ईयर एंड, एंड उसमें फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है मार्च 31st. उसमें क्या वो जो मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं वो बजट प्रिपेयर करते हैं. वो बजट इन पब्लिक को भी वो सुनाते हैं. लास्ट ईयर कितना हमें सोर्स, कौन सा सोर्सेस में हमें प्रॉफिट मिल गया है, वो कैसे वो मैनेज किया है, कैसे था वो प्लानिंग, एंड कितना लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया ईच सेक्टर में, वो वेरीफाई करते हैं, राइट. एंड अगला साल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब बजट में होते हैं. एंड in which he or exhibit the present condition of public treasury. So अभी का क्या है, the status क्या है फाइनेंस का, and one the basis of such information set forth his program of for the year to come. Okay, वो अभी का स्टेटस, पहले का स्टेटस क्या है फाइनेंस का, अभी का स्टेटस क्या है, एंड आगे क्या स्टेटस हो सकते हैं, ये सब होते हैं फाइनेंशियल बजट का इम्पोर्टेंस. ओके, and in word of Professor Demock, we already saw Professor Demock वो meaning भी define किया है. He defined budget is a balanced estimate of expenditure and receipt for a given period of a time. एक one period पे budget क्या होते हैं, simply budget is the one of the balanced estimate होते हैं. तो expenditure क्या है and our profit क्या है, ये सब में एक balance sheet होते हैं budgeting. In the hand of the administration, the budget is a record of part performance of a method of current control and projection of a future plans. उसमें से होते हैं future planning भी. एक administration का, एक efficient administration can do well in the budget, and they can also plan and prepare well planned economy for the country. Okay. And second one is accounting. Accounting is the record ingredients of a financial administration. It's also one of the ingredients है accounting. It is an art by which the financial effect of executive action are recorded. So accounting, accountants होते हैं, एक whatever the organization or other, वहाँ पे एक accountants होते हैं. They will calculate the day by day financial process of the company or an authority. Okay, they assembled and finally summarized in the form of a financial report. वो लोग क्या करते हैं, वो record बनाते हैं, then उसमें एक finally वो एक financial report बनाते हैं. एक good accounting system is indispensable for adequate budgeting control. ये क्या होता है, एक budget control के लिए important है ये financial report. Therefore there must be harmonious relationship
relationship between the goals in budget and the financial statement prepared from accounts. So ये accounting कौन करते हैं? Accounts करते हैं. ये financial statement and budget में it's both are very related. So financial statements में क्या बनाते हैं? Budget बनाते हैं. Okay. And third one is auditing. Auditing is considered the final stage. It's the final stage of the method of financial administration. In fact, it is investigation of a report and legally efficiency and accuracy of the financial transaction. This is the auditing. Even company में भी, even in government system में भी ये auditing होते हैं. उसमें audit में क्या होता है? एक report बनाते हैं, एक investigation होते हैं. ये finance कैसे चल रही है, उसमें कुछ legally या इन करप्शन कुछ हुआ है क्या, ये सब कैसे पता चलते हैं? ऑडिटिंग में थ्रू पता चलते हैं. ऑडिशन इज 2 टाइप्स. इसमें भी है 2 टाइप्स ऑडिशन है. वन इज इंटरनल and one is external. The chief motto of audit is only to supervise the manner in which expenditure has been made in order to ascertain whether the executive has spent in accordance with the rules and regulations. Once एक देखते हैं इंटरनल वाला, अंदर का एक होते हैं, एक बाहर का भी होते हैं. उसमें एग्जीक्यूटिव कैसे बनाए हैं, लॉफुली है क्या, हैंडल किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके दे मैनेज द बजट, दे सब ऑडिटिंग में थ्रू पता चलता है. ऑडिटिंग इज एन independent department who point out re-regulation and submits its report to the higher authority. It's an independent organization or independent department है ये auditing department. उसमें से दे न्यूट्रल होता है, किसी के साइड नहीं थे. दे जस्ट चेक द अकाउंट्स एंड इफ एनी करप्शन दे विल रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी एंड इफ एवरीथिंग इज विल फाइन दे विल do the report like that way. Okay. And methods क्या है? Methods or process of financial administration. इसका fourth one क्या है? Fourth one is purchase and supply. As the name implies, it is acquisition of property. Purchase and supply में इसमें ये name में भी बता सकते हैं. It's an acquisition of property. In other words, purchasing is a report of large category of supply which covers specialization, traffic management, inspection, storage and proper utilization of different resources. Okay. हमें फाइनेंस कैसे आते हैं? सम टाइम लैंड से आते हैं, सम इन रेलवे से आते हैं. ये सब रिसोर्सेज है. हम वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे से मैनेज होना चाहिए, उसका स्टोरेज भी होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए. दिस इज़ द last method of financial administration. And principles क्या क्या है? Principles of financial administration. Generally in democratic setup there are guiding principles for the operation of financial administration. क्या क्या है ये guiding principles? One is principle of unity in the organization. We all know that unity provides strength to all of us. Okay. On unity होना चाहिए. Whatever the authority, whatever the organization, there is need a unity. According to this principle, there must be control of central authority on financial administration. इसमें ये unity के थ्रू क्या होता है? एक अच्छे से control हो जाता है. However, it does not mean that every work is done by superior authority. एक सुपीरियर अथॉरिटी सारे काम कौन करते हैं? सुपीरियर अथॉरिटी नहीं करते, उसके अंडर भी स्टाफ्स होते हैं. ये सिर्फ एक चीज़ से काम करना चाहिए, एक यूनिटी वहाँ पे होना चाहिए. देन ओनली वहाँ पे एक लॉफुल काम हो जाएगा, स्पेशली इन फाइनेंशियल सेक्टर. ओके. इट सिंपली मीन्स दैट देयर मस्ट बी क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड हायर एग्जीक्यूटिव्स शुड हैव फुल कंट्रोल ओवर ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव. ओके. आई होप इट्स क्लियर. एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी and regularity. According to this principle, financial administration should have the quality of simplicity. Simple होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए what is the maths behind it or account behind it. And regularity होना चाहिए and promptness होना चाहिए. Red tapeism should be totally eliminated. Red tapeism totally वहाँ से eliminate करना चाहिए. एंड द वर्क प्रोसीजर शुड बी क्वाइट सिंपल. सिंपल कैलकुलेशन एंड मेथड्स होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए. दैट्स इट. क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द एवरेज पर्सन. एक सिटीजन्स, बिकॉज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये फाइनेंस कहाँ से आते हैं, सोर्स कहाँ से आते हैं, वाट एवर द अथॉरिटी सोर्स कहाँ से आते हैं,
सिंपल सिटीजन के पास है, सो दे में भी इट्स एवरेज होगा उन लोगों का पढ़ाई लिखाई, तो उसमें उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए हमारा सोर्स कहाँ के पहुंचा है, कौन यूज़ कर रही है, कैसे यूज़ कर रही है, ये सब सबको भी पता होना चाहिए. ओके. And third principle is a principle of compliance with the will of the legislature. According to this principle, no expenditure out of public revenue is incurred unless it is sanctioned by the parliament. So whatever the expenditure वो parliament sanction करना पड़ेगा. Okay, that's the important point. In the Constitution of India, it has been mentioned as no money out of the consolidated fund of India or the consolidated fund of state shall be appropriate except in accordance with the law and the purpose and the manner as passed by legislature. So एक फंड यूज़ करने के लिए किसका अनुमति चाहिए, पार्लियामेंट का अनुमति चाहिए. दैट्स सिंपली वहाँ पे दे दिया है पॉइंट. प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल. According to this principle, it is essential to have effective control at every stage of financial administration. Okay, financial administration में each stage में thoroughly अच्छे से control होना चाहिए. Generally, the following agencies are involved in the control of financial administration of the government. Government का financial administration कौन कौन कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव करते हैं, देन लेजिस्लेचर करते हैं, देन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री करते हैं, देन ऑडिटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, देन पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं. ये सारे 5 1 2 3 4 5 सो ये 5 सेक्शन में भी अच्छे से thoroughly वो अच्छे से इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए. दैट मीन्स ये रिजिड कंट्रोल नहीं है, सिंपल कंट्रोल है, बट वो सारे स्टेप्स में चेक होना चाहिए इज इट लॉफुल या नॉट. ओके. And fifth principle of what is the fifth principle? Fifth principle is it's a uniformity. According to this principle, there must be uniformity in all departments. Whatever वो क्रॉस चेक आएगा, एक फाइनेंस में एक खर्चा हो गया तो उसमें क्रॉस चेक आएगा, प्रॉफिट आएगा तो इसमें भी चेक आएगा, बट एक यूनिफॉर्मिटी सारे डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए. ओके. और सेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आज to the policies of expenditure, revenue and loan etc. सारे एक लोन पास कर रहे हैं, अदरवाइज एक रेवेन्यू के बारे में एक्सपेंड वाट एवर इज द, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स में भी एक यूनिटी होना चाहिए. अदरवाइज एक 4% इंटरेस्ट में लोन दे दिया, एक डिपार्टमेंट वो 2% में कर दिया. दैट्स नॉट फेयर. ओके, दैट्स कांट एक्सेप्ट इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड सिक्स्थ प्रिंसिपल इज the principle of authority. According to this principle, no tax shall be levied or controlled levied or collected unless it is approved by the representative of the people. So people representative का अनुमति होना चाहिए किस चीज़ के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए. In the Constitution of India has been mentioned as no tax shall be levied or collected except by the authority of law. एक टैक्स हम टैक्स पे कर रहे हैं है ना, रोड टैक्स पे कर रहे हैं, एंड हमारा होम के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, एंड हमारे इनकम के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, ये सब चीज़ के लिए टैक्स होते हैं. तो ये गवर्नमेंट का कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट का पूरा मनी, हाफ ऑफ 90% मनी इज़ कमिंग फ्रॉम टैक्स. सो आवर मनी है, गवर्नमेंट का मनी मीन्स सिटीजन्स का मनी है. सो वो क्या होना चाहिए, एक लॉ के हिसाब से हैंडल करना चाहिए. एंड प्रिंसिपल नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी गवर्नमेंट इज बाउंड टू स्पेंड द मनी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट फॉर नो पर्पस अदर दैन इट वाज सैंक्शनड बाय द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. सो सब चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट का अनुमति चाहिए, वहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए. इन ऑर्डर टू चेक द abuses of honor on the part of executive, the auditor general audits the account of the government to place before the legislature a report to show that executive has spent the money for the purpose for which parliament has sanctioned. So executive, so ये भी क्रॉस चेक होते हैं कौन को क्रॉस चेक करते हैं, ऑडिटर जनरल. सो पार्लियामेंट में जो सैंक्शन किया है वो चीज़ के लिए वो सेम मनी किस चीज़ के लिए स्पेंड किया है, फॉर व्हाट डेवलपमेंट, जो भी वो पार्लियामेंट में दे दिया उसमें ही एक्सिक्यूट करना ही चाहिए. Thus the provision for the appointment of the controller and auditor general is laid down in the Indian constitution to achieve
achieve the above objective. So एक पोस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक पोस्ट होता है. ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मेन जॉब क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी कीप करना. दैट्स द मेन जॉब फॉर द कंट्रोलर, CAG इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG. ओके. एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का? फॉर द सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, different constitution play imperative role. These agencies can be grouped as: one is executive, second one is legislature, third one is financial department of financial ministry, fourth one is auditing department. And we will see the first one, executive. According to Professor H.M. Grover, the executive is the best position to the view the financial problem as the whole and to the assume the responsibility for the success and the failure of financial program. So executive पहले कौन handle करते हैं? Actually executive handle करते हैं. Executive is the responsible for running the administration. वो कौन run करते हैं administration को? run करते हैं executives. Thus it is in the best position to say what fund are required for it. कौन सा फंड कहाँ पे रिक्वायर होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करते हैं? एग्जीक्यूटिव. नो टैक्स और एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. सो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इम्पोर्टेंस है. इट इज़ देयर फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू प्रिपेयर द बजट विच इज़ स्टुपिडेस्ट टास्क. In parliamentary government, there is a principle that no demand for grants can be made except on recommendation of the executive. वहाँ पे except on recommendation of executive. It's very important. And it is therefore in India, executive refers to the central government, since financial ministry is responsible for the administration of the finance of the central government. Okay, वहाँ पे कौन है important? Financial ministry है. Even then it performs the policy making function and it tries it's the best to get the financial approval of the legislature. So सारे चीज़ का important authority कौन है? Financial ministry. Okay. And second one is legislature. In democratic parliament system, it is legislature or parliament which is the time representation of the people. In India, under the constitution, there is a special provision to control the finances. One is कंट्रोलर और टैक्सेशन, कंट्रोलर ओवर द टैक्सेशन के ऊपर एक कंट्रोलर होना चाहिए. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 265 प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड और कंट्रोल्ड एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ लॉ. लॉ के अलावा लॉ होना चाहिए. एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक लॉ होना चाहिए. दिस द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रेजेंट ऑल टैक्स प्रपोजल्स बिफोर पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ ए बिल टू बी passed into law. एक बिल वहाँ पे, एक बिल टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक प्रपोजल बिल वहाँ पे रखना चाहिए पार्लियामेंट के सामने. एंड अनलेस नो आर्ट इज पास्ड, नो टैक्स कैन बी लेवीड. सिमिलरली USA कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 1 mentioned, the Congress shall have to levy and collect tax. Therefore, under we can conclude that power of taxation always vests with literature. मतलब वो एक वहाँ पे एक लॉ होना चाहिए, वो लॉ के हिसाब से ओनली वी कैन कलेक्ट द टैक्स सिंपली. एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर. एक पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, ऐसे फालतू में हम एक्सपेंडिचर कर नहीं सकते, क्यों? कंट्रोल होना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कौन सा प्रोग्राम में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है, ये सब में कैलकुलेशन होना चाहिए. In Indian Constitution states all revenue received of all loans by the union or state shall be paid in the consolidated fund of the union or state. As case may be, add that no money can be written out of the fund except in the accordance with the law or for the purpose and whatever the purpose. कौन सा पर्पस के लिए फंड दे दिया है, वो पर्पस के लिए वो फंड यूज़ करना है. कितना फंड है, ये सब इम्पोर्टेंट है. वो पहले पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, उसके लिए एक लॉ भी होना चाहिए. एंड third one is enforcement of financial accountability. Every government is to bound to spend the money granted by the parliament or for no purpose other than it was sanctioned by the legislature or parliament. Okay.
And instruments में next क्या है? The financial ministry. It's very important. Financial ministry. This finance ministry plays a significant role in the financial administration as it is ensure that proper use of public fund. Public का fund अच्छे से use कर रहे हैं, proper way में use कर रहे हैं. ये कौन ensure करते हैं? Finance ministry ensure करते हैं. It controls the both before the presentation of budget to parliament and in it executive after approval by the parliament. एक budget का सेक्शन पे भी ये इंश्योर करते हैं एंड आफ्टर द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पे भी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब इंश्योर कर रहे हैं. द फाइनेंस मिनिस्ट्री passes the expert knowledge in financial matters. It considered all proposal to each ministry in the perspective of the government as whole. The various schemes and proposals of the different ministries are included in the budget after consultation and discussion with the finance ministry. After the final approval of the budget by the parliament, it seeks to ensure that the amount are properly spent in accordance with the provision of budget. Therefore, it is finance ministry which frames rules and regulations about the preparation and executive of the budget. The ministry of finance has been divided in 4 departments. So ये ministry of finance करते हैं सारे चीज़ execute. So उसके लिए departments भी होते हैं इसके अंदर. Department of economic affair, department of revenue and insurance, department of expenditure and department of coordination. Okay. And fourth one is auditing. Auditing is the most important ingredient of parliament control over the finance of country as a whole. In democratic form of government, the supreme authority with the regard to finance policy is vested in legislature. Okay, this is ensured by the provision of audit of public expenditure by the independent statutory authority, that is controller and auditor general. So controller and auditor general होते हैं सारे budget and all things audit करते हैं. Therefore, audit supplies an essential link between executive and parliament and help in interpreting the action in so as the have a finance bearing of the former on the latter. Okay, hope you enjoyed our lesson. If any doubts, you can comment on comment box. So you just focus on the legislature, executive and finance ministry के departments and हमारा budget का word कहाँ से आ गया and financial administration मतलब क्या है, ये सब आप focus कर लेना and apply to it in the university system also. This is our